नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कहाँ-कहाँ से जुड़े हैं लोग मेरे साथ बताइए। तो आईपीएल का सिलसिला चल रहा है क्योंकि और कुछ फ्रैंकली है ही नहीं बात करने को। हाँ, एक टी20 सीरीज चल रही है। वेल, खत्म हो गया वो सीरीज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच। वैसे यू नो व्हाट, वी आर इंडियंस, वी आर वाचिंग द इंडियन प्रीमियर लीग, लाइक इट नॉट लाइक इट, कारवां तो चलेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट आईपीएल। कल का मैच फ्रैंकली मुझे काफी बोरिंग लगा बिकॉज़ राजस्थान रॉयल्स गेटिंग टू 151, इस सीजन का लोएस्ट स्कोर। मरियल सी मैच लगी मुझे। आई लाइक एंटरटेनमेंट। आई वांट टू बी, इफ इट्स टी20 क्रिकेट, इफ इट्स आईपीएल, मुझे एंटरटेन करो। और कल के मैच में, और अगर आपके व्यूज अलग हैं तो बता दीजिए मुझे। कल का मैच मुझे एंटरटेनिंग नहीं लगा। 152 का टारगेट थक थक के मर मर के केकेआर वालों ने पार किया। वेल प्लेड क्विंटन डिकॉक। आई डिडंट थिंक ही वाज गोना डू समथिंग लाइक दैट। ही गॉट 97 नॉट आउट। वरुण चक्रवर्ती आउटस्टैंडिंग, 4 ओवर 17 रन। मोइन अली, जिनको मौका मिला पहली बार केकेआर के साथ ड्यू टू एन निगल टू सुनील नारायण, ही बोल्ड फैंटास्टिकली। वैभव अरोड़ा ने अच्छी बॉलिंग करी। बट यार, जिस मैच में एक टीम की बैटिंग इतनी खराब है, थक थक के मर मर के, और जोफ्रा आर्चर 16 रन नहीं मारते, तो भाई वो टीम वहां नहीं पहुंच पाती है। कौन है हमारे साथ? जयदीप पूछ रहे गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो भाई? व्हाई डू आई लाइक लो स्कोरिंग क्लोज मैचेस? I don't mind, Jaideep. I don't mind them myself. But yesterday was not a, I mean, low scoring by आजकल के स्टैंडर्ड से। और हम आएंगे इस टॉपिक पर क्योंकि आई थिंक आज 300 पार हो सकता है अगर हैदराबाद की बैटिंग पहले आए। बट लो स्कोरिंग थ्रिलर्स कैन बी फन। बट देन जयदीप भाई, यू गेट दीज काइंड ऑफ मैचेस। जो कल का मैच था, राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग खराब है। ये ऑक्शन के टाइम पे ही इनकी दिमाग खराब हो गई, इनकी सोच खराब है। यू लुकिंग एट समथिंग लाइक दैट, it just doesn't add up, right? The batting is confused. Shubham Dubé, impact player, he's coming ahead of Hetmeyer. Hetmeyer नंबर 8 पे बैटिंग कर रहे हैं। आप ध्रुव जुरैल से आगे भाई। ध्रुव जुरैल ने पिछले मैच में क्या पारी खेली। कल ही लुक गुड। आप इनसे आगे आप वनिंदु हासरंगा को भेज रहे हो। संजू सैमसन, चलिए मानते हैं कि टीम के फिजियो ने उनको कीपिंग करने के लिए पास नहीं किया गया, उनको सिर्फ बैटिंग करने के लिए पास किया गया। But I'm sure he could still be the captain. Rihan Parag, though, he looks clueless. So these kind of matches, Jaideep, when one team is not doing well, it's struggling, and then the other team takes almost 18, 19 overs to get the target, I don't like it. I want some entertainment. और इसी बात पर आज का टॉपिक है। आज I think मजा आने वाला है। We got a comment from Shubhajit, तो कह रहे हैं QDK batted beautifully and showed experience. Correct, fantastic innings, one of his best innings without getting 100. But I don't know, मुझे मैच काफी एवरेज लगा because there's not enough quality skill. The skill was mainly stacked in KKR's favor. खासकर जैसे कि आप कह रहे हो, शुभजीत घटक, Quinton de Kock, as well as some fantastic spin bowling from Varun. Pitch was, I don't think it was conducive to T20 cricket. You do need these pitches. You don't want, जैसे आज का मैच उपल में होगा, आपको हर मैच ऐसा नहीं चाहिए जहां पे टीम 280 290 मारे. You need the balance. But I don't know whether yesterday's match was it entertaining? आप लोग बताइए. Impact player was correct. It's not against the spirit of the game. ऐसा कुछ नहीं है. पर हाँ, ये जो आपने लास्ट पॉइंट रेज किया है, जब से आया है 2.5-3 साल से, आप में से बहुत लोगों ने इस बात का जिक्र किया है, मैंने भी अपने व्यूज शेयर किए, एंड दैट्स व्हाई T20 वर्ल्ड कप 2024 पिछले वाले, उससे पहले हम बात कर रहे थे कि अब आपके पास ऑलराउंडर्स नहीं है। क्या शिवम दुबे एक्चुअली आईपीएल के मैदान पे, नॉट प्लेइंग फॉर डोमेस्टिक मुंबई इन डोमेस्टिक क्रिकेट, क्या आईपीएल के मैदान में शिवम दुबे ऑलराउंडर है? नहीं है। ऑलराउंडर होने के लिए आपको गेंदबाजी भी करनी पड़ती है। शिवम दुबे सिर्फ और सिर्फ छक्के मारते हैं चेन्नई के लिए। Venkatesh Iyer, the guy's played half a dozen matches for India. He'll probably never play for India again because he's not doing half of what his bio, his CV says he is. A seam bowling all-rounder. I like Venkatesh Iyer. बड़े अच्छे छक्के मारते हैं वो, नॉकआउट्स मैच में बड़े क्रंच परफॉर्मेंसेस में वो चलते हैं, लेकिन he's not bowling. So these kind of players do not get a chance. आपको नीतीश रेड्डी टाइप, भले उनकी बॉलिंग बहुत कमजोर है, नीतीश रेड्डी की बात कर रहा हूं, आपको सीम बॉलिंग डालनी पड़ती है अगर आपको इंडियन टीम में आना है। तो आई एग्री विथ यू, इट्स किलिंग ऑलराउंडर्स, बट इट्स नॉट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम. Cheating is against, fixing is against the spirit of the game. Jaiswal 18 crores. Yes, Samson 18 crores. Jurel 14 crores. Parag 14 crores. Release Butler. Exactly. That's why I said, if you watch my preview video last week when I talked about Rajasthan Royals, I said it in 3-4 times.
in that video, Rajasthan Royals will finish one of the lowest teams this season because of their pre-auction, yani कि releasing. But what what team releases Butler, Ashwin, Bolt, and Chahal? That is pretty much, I would say, 80% of your team's talent. With all due respect to Sanju Samson and Dhruv Jurel and Jaiswal, these four guys, they're a vault and a half of experience. आपने चलिए Butler के 2 season खराब थे. You lost faith in Butler. You kept Hetmeyer as your only overseas retained player. Shubham Dubey, Wanindu Hasaranga. I said this in my previous video. Exactly what Ravi Shankar is saying. It's the blunders. It's the blunders that they spend so much money in getting these bowlers. I think they spent 28 something crores on getting Jofra Archer. We've seen he's had two terrible games. One into Hasaranga. Who else have they got? Mahesh Tikshana and one more bowler. Auctions, guys. What you do at auctions often dictates how your franchise ends up on the standings. And Rajasthan Royals, based on the four blunders and retaining players like Hetmeyer, who I don't understand why he's still there. Actually, आपने उनको रखा भी, आप उनको नंबर 8 पे बैटिंग करा रहे हो. Doesn't make sense. चलिए, let's get into today's match. आज का मैच दोस्तों उप्पल में है. Sorry, उप्पल कहाँ है? हैदराबाद में. सबसे पाटा wicket. That's the place where 300 has been almost breached in the last few matches there. और आज हैदराबाद सबसे विस्फोटक, the most dangerous batting team, is playing the weakest bowling attack in this tournament. LSG. Yes, Avesh Khan might come back, but they're down their core bowlers. That's why they had to go to uncapped players last time. If Hyderabad bats today, I think अगर इनका दिन रहा, I'm looking at Lucknow's bowling. It's depleted, you know. 3-4 इनके बड़े bowlers नहीं है. हो सके आज 300 हो जाएगा. Who will win? Is that a question? I think, my friend, again, it's cricket predictions बहुत बार गलत साबित हो चुके हैं मेरे. But like I said, हैदराबाद की बैटिंग को देखकर दोस्तों, ईशान किशन के आने से one more fantastic depth, and then Amit Ganguly, the bowling on view. I think it's SRH all the way. Chasing might be a problem. They had some problems last year, but you know, something's working really well. I think this team under Pat Cummins अपने आप को back करेगी, sorry, to try and blast their way all the way up to 300. But I think आज ऐसा होगा. SRH bowling needs to step up, not take casualty. Bilkul, we discussed this after the last match. The match, I mean, they didn't win by some huge margin. I think they won by 44 runs. That's big in T20, but conditions के हिसाब से, you know, they allowing Rajasthan Royals to get to 240 odd. Bowling is definitely problematic here. Do you think SRH do have the bank depth like last year? Yes, they. Like I said, Aniket Verma, with all due respect to what he's achieved in domestic cricket, Shubhajit, can he do consistently what some other uncapped players have done? Can he do जो प्रियांश आर्या कर चुके हैं? क्या वो आयुष बदोनी की तरह कर सकते हैं? उम्मीद करते हैं शुभजीत कि अनिकेत वर्मा can do it, but he's playing the IPL for the first time. Abhinav Manohar has gone around several teams. I think he's a guy, उनको शायद एक सीजन में 3 या 4 ही मैचेस मिलेंगे. Nothing against their talent, but I look at them. What happens on that day? और दिन आएंगे ऐसे जब बड़े नाम नहीं चलेंगे. Will Aniket Verma and Abhinav Manohar be able to consistently step up? I have doubts, but who knows? But definitely beyond that top 5, and I think it's the best top 5. If Klaasen is your 5th player or Nitish Reddy is your 5th player, that to me is the goddamn best top 5 in this league. लेकिन उसके आगे अगर इनका खराब दिन रहा या फिर एक ही बंदा चला, मानिए कि क्लासन के साथ अनिकेत वर्मा है और क्लासन के साथ अभिनव मनोहर है, क्या वो चल पाएंगे? I'm not so sure yet. नहीं प्रतीक, नहीं, बिल्कुल नहीं. Correct. And Jaiswal himself is a very inconsistent player, so doomsday, my friend, for RR.
All right, depending on their batting season, Parag, Jaiswal. Correct, the batting is entirely where it's at. But, again, दो ही मैच हुए हैं. आप कह सकते हो भाई क्या बकवास कर रहे हो, दो ही मैच हुए हैं. मानता हूँ दो ही मैच हुए हैं, बट वो ऑक्शन से पहले उन 4 प्लेयर्स को रिलीज करना, फिर ऑक्शन में कुछ not convincing decisions, I would say, जो RR की मैनेजमेंट ने ली. It, as I said in my preview video for this franchise last week, doesn't look like a playoff team to me at all, at all, at all. So, what's up? You think KKR should win? I don't know. It's a very good question, by the way, Swam. क्योंकि कल मैं भी एक बात को लेकर मैं भी कंफ्यूज था. I was making my fantasy team. क्विंटन डिकॉक या मोइन अली. ऐसे मोइन अली अगर नारायण नहीं खेल रहे तो मोइन अली ओपनिंग करेंगे और वो जरूर 4 ओवर फेंकेंगे. And having seen the inconsistent run the Dickox had, so मैंने कहा यार, I think आज मैं पहली बार, normally I always take Dickok, मैंने कहा नहीं यार, I just don't see it. Then of course, cardinal sin in fantasy cricket, never drop the player who you picked originally. तो I dropped him. कहने का मतलब है कि मैं फैंटेसी क्रिकेट और क्विंटन डिकॉक और आपके सवाल को इसलिए जोड़ रहा हूं बिकॉज आई थिंक इट माइट बी द बेस्ट वी सीन फ्रॉम हिम. बहुत बहुत अनुभवी प्लेयर है, ये टाइटल्स जीत चुके हैं, ठीक है, ही नोज व्हाट टू डू. बट डिकॉक उस स्टेज पे है कि कंसिस्टेंसी को लेकर सबसे बड़ी समस्या है. ही माइट गेट 2 more 50s in the next 13-14 matches when KKR go to the playoffs. Is it a flash in the pan? Shad Swam, I won't go that far to say flash in the pan, but I'll say I don't know whether the fans, as you said, should expect such more performances. That's just my basic view on that. Correct. That was the match where effectively हम घुमा फिरा के कह सकते हैं कि केएल राहुल और संजीव गोयनका के बीच रिलेशन ब्रेकडाउन हुआ था ना. अब की बार 300 पार. बिल्कुल यार, बिल्कुल. चलिए, I'm not aware of this, but let's see. होगा. The real test is whether they can chase down. Correct. Chasing. I think somebody else has already asked this question. Chasing में ही, that's the problem we've seen with this team. Yes, I saw that. A lot of wickets fell on the first day. Aniket Verma was looking good in practice match and correct. There's, like I said, talent की कोई कमी नहीं है इस देश में एक तो, और हैदराबाद की टीम पे. बट क्या ये कंसिस्टेंटली डिलीवर कर पाएंगे? अगर हाँ, तो जो मैंने प्रिडिक्ट किया था आईपीएल से पहले कि सनराइजर्स हैदराबाद ये टूर्नामेंट जीतेगी इस बार, then it has to be what you're saying, Saram. The Manohars and the Vermas have to click. So, like I said, the best team on paper. Let's hope these uncapped players do well. Sir, hello. Good morning. कैसे हो भाई? See, मोहसिन खान ruled out. पिछले मैच में जब लखनऊ दिल्ली का मैच था तो आवेश खान और आकाशदीप और मयंक यादव तीनों एनसीए में थे. उन तीनों में से देखिए 4 बॉलर आप डाउन हो, एक तो टूर्नामेंट से बाहर है, उनकी रिप्लेसमेंट शार्दुल ठाकुर बन के आए. बच्चे मयंक और आकाशदीप, they're still at the NCA. Avesh Khan has got the clearance since Lucknow's last match, so he should definitely come back. They need Avesh Khan. यार रही बात बिश्नोई की ना यार, I'm a big बिश्नोई fan, लेकिन जैसे एक हमारे रेगुलर कमेंटर हैं मनीष सोलंकी, he commented saying कि लगता नहीं है कि अब बिश्नोई अपने आप को बेटर कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं. तो दिस इज माय चिंता रिगार्डिंग बिश्नोई. ही इज स्मार्ट बट ही इज बिकमिंग प्रेडिक्टेबल. सो आई लाइक बिश्नोई. उम्मीद करता हूं कि वापसी करे, बट आई डोंट नो, आई होप, बिकॉज़ इफ नॉट दिस टीम इज गोना गेट 300. व्हाट काइंड ऑफ मैच आई लाइक टू वॉच अ मैच जहां पे, like I said, ये सवाल 2 दिन पहले भी आया था. Give me 220, 225 and give the team chasing a chance to get there. I'm not एक आध मैच में 280 देख सकता हूं. I don't want anything going beyond 250 every single day. I also don't want matches like yesterday जहां पे the pitch was not conducive. I want a challenge. I want bowlers to have something. और आप कह सकते हो कि भाई जब टीम, अगर आप कहते हो कि 235 बनेंगे तो बॉलर्स का क्या है? इट्स अ मिसकंसेप्शन कि आजकल हर बॉलर 9, 10, 11 रन प्रति ओवर दे रहा है. वो कुछ वेन्यूज में हो रहा है. दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव अ बैलेंस. सारे मैचेस उपल जैसे नहीं हो सकते हैं, सारे मैच गुवाहाटी जैसे नहीं हो सकते हैं, सारे मैच वांकड़े जैसे नहीं हो सकते हैं, सारे मैच चेन्नई जैसे नहीं हो सकते. यू नीड दैट बैलेंस, एंड आई थिंक द चैलेंज फॉर इंडियन क्रिकेट
ना सिर्फ आईपीएल में, खासकर टेस्ट क्रिकेट में चैलेंज है कि आप किस किस्म के पिचेस आप दे रहे हो। सो आई वांट अ मैच जहां पे एक स्पिनर को 3 विकेट मिलने के चांस है, एक फास्ट बॉलर को 5 विकेट मिलने के चांस है, और बैट्समैन को 100 मारने का चांस है। डोंट मेक इट टफ फॉर द बैट्समैन, डोंट पुट इट एंटायरली इन द फेवर ऑफ द स्पिनर्स लाइक गुवाहाटी, एंड डोंट गिव अ पार्टा विकेट जहां पे ट्रेविस हेड आंख बंद करके लप्पे मार सकता है। गिव मी बैलेंस, बट इफ यू वांट माय आंसर टू व्हाट काइंड ऑफ स्कोर आई लाइक टू सी 220, 225, 230, दैट मींस बाउंड्री आ रही है, और बाउंड्री देखने में मुझे बहुत मजा आता है। क्या एसआरएच बॉलिंग भी आपको अच्छी नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल। आपने शायद मेरा प्रीव्यू वीडियो नहीं देखा। मैंने कहा इस टीम के पास सबसे बेस्ट बॉलिंग है इस पूरे टूर्नामेंट में। दे आर द वन दैट्स गोना विन द ट्रॉफी। Ara's bowling, correct. I mean, so the reason why they're looking like one of the worst teams this season is because they let, like I said, Bolt, Ashwin, Chahal, and Josh Butler go. चलिए आप, it's a business, नहीं? Like I keep saying to you guys, IPL cricket is a business. ये आप और मैं नहीं समझ पाएंगे। ये business है, ये कैलकुलेट करके, ये मार्केट को देखकर, ये सब कुछ देखकर नाप तोल के ये टीम्स बनाते हैं। ये कॉर्पोरेट लोग हैं, ठीक है? ये हमसे बहुत 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 आगे हैं, ठीक है? पर इनके डिसीजंस ऑक्शन पे जब ये पैडल उठाते हैं, हाफ द टाइम दे डोंट मेक सेंस टू मी। एंड मैं मानता हूं कि मुझे बिजनेस का बी नहीं पता। ये लोग कुछ सोच के आए, तभी ये लोग यहाँ बैठे और मैं यहाँ बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। पर एक कॉमन सेंस नाम की चीज होती है, एक क्रिकेट की समझ होती है, जो मैं मानता हूं आप लोग में है और मुझ में है। व्हाट डिड आरआर डू? डिड दे एक्चुअली बाय प्लेयर्स वर्थ रिप्लेसिंग बटलर, बोल्ट एंड दीस गाइज? नहीं। बट व्हाट आर दे गॉन फॉर? देव गॉन फॉर बॉलर जो भाई ऐसे पिचेस पर वो नहीं चलेंगे। और जॉफर आर्चर, क्या वो 14 मैच खेल भी पाएंगे? आई डोंट नो। वो 2 साल के बाद आईपीएल में वापसी आ रहे हैं। एंड सो आई जस्ट लुक एट देयर कोर। आई मीन, शुभम दुबे, नथिंग अगेंस्ट हिम, बट you're batting him ahead of Hetmeyer, you're batting Hasaranga ahead of Dhruv Jurel, one of the finest young talents who should be playing all formats for India. So these things I look for beyond the obvious losses. It's just the thinking, Soham, in this team. पिछले साल जो केएल को सुनाया था गोइंग करने आज पंत की बात, सबका नंबर आएगा बबुआ, सबका नंबर आएगा। Don't know why teams are paying too much. Exactly, it's a good question, Ravi Shankar. Like I said, these are conglomerates. These are multi-crore pati log who run successful empires. You and I don't run empires. We don't have the money that these guys have. There's a clear thought process behind getting Rishabh Pant. But to the common cricket fan like you, my friend, and others here, we understand that Rishabh Pant's weakest format is the T20 format. But Sanjeev Goenka is not necessarily here to, don't get me wrong here, is not necessarily here to win cricket matches. Of course, वो IPL जीतना चाहते हैं, लेकिन LSG एक ब्रांड बन रही है। इनका क्या, ये इनका 4था साल है। They're in the infancy stage. It's a very, very new team. KL Rahul was retained for 16 crores. Now, I can tell you that's a hell lot of money to play for a player whose name is KL Rahul. Rishabh Pant is a younger player. He's got a bigger brand value in Indian cricket. People can invest in. He's a sellable face. इनके ad आजकल क्यों चल रहे हैं? KL राहुल के ad नहीं आ रहे हैं आज ना। वो पोकर, उनका एक ad था, विंजो या डंजो, कोई था गेम, फैंटेसी गेम कुछ साल पहले। आजकल उनके ऐड नहीं आ रहे। आजकल मैक्सिमम विराट कोहली, इवन धोनी के बाद अगर एक क्रिकेटर है जिनका चेहरा हमें दिख रहा है, उनका नाम है ऋषभ पंत। So understand, Ravi Shankar and others with the same thought. They're not just spending 27 crores to get Rishabh Pant to come and fall on his ass as he plays a shot, or to take some keeping and give some lovely banter. It's brand Rishabh Pant is what they draw him. Galat, sahi, let's not be the judge of that, but understand they're paying because Riyan Parag and Dhruv Jurel, they're not sellable names. And Ravi Shankar, make no mistake, IPL is a business. It's not for the traditional cricket fan. It's not for the common sense carrying cricket fan. It's a business. It's a hugely successful. I think NFL के बाद IPL सबसे successful IPL property, sports property, ऐसे मैंने कोई report देखा था कहीं. So it's a business. So Goenka,
can afford to spend 27 crores, he's building a brand. He's not necessarily looking at what happens on the field. Of course, when this team fails to make the playoffs, or जरूर होगा, Rishabh Pant will, the heat will be turned up on him. But 27 crores for them, for him, and not for Parag and Jurel, because Parag and Jurel do not draw the fans in. They're not bringing revenue. Rishabh Pant आने से brands आते हैं. That's why 27 crores is change for Goenka. Do you think in the hunt for 300 Bilkul, I think we saw this once last season before. Definitely. Keith, they are playing the most high risk, low reward approach to cricket. Traditionally, cricket में ऐसा होता नहीं है. You're supposed to value your wicket. But what SRH are doing now, और ये बहुत टीम्स पहले भी कर चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया ने किया है, रोहित शर्मा की टीम, इंडियन टीम भी ये कर चुकी है. They're saying, boss, we'll take risks, but if taking risks gets us to the highest score, gives our bowling the better chance to win a match, well, by all means, we'll do it. But yes, Keith, there will be days when they will struggle to do that. I think Travis had just a slog. He cannot score a 50 on a tough pitch. Well, he got a match-winning 100 on a pretty tough Ahmedabad pitch, November 19th. Maybe you missed that match. The Oval was a tricky pitch. Day one of the WTC final, he got 100 there. So I think he scored hundreds in two of the three biggest matches when it comes to world cricket. So I think he's a bit more than a slogger. He's a world champion. Dodgy technique, swing and miss a lot, looks ugly, but he's not a slogger. You want overrated? There's another Australian I can tell you who's massively overrated, my friend. His name is Glenn Maxwell. DC is replicating RR's template. Bowling lineup. DC also, I mean, they've got a slightly better, but I'm not sure how you're saying they're trying to replicate. That's why they're my top four between RR, SH, MI. Interesting. DC, I'd be surprised, my friend, if DC get there. But who knows? They have Mitchell Stark. He often goes for runs, but in the big matches, the knockout matches, he really steps up. So let's see. Maybe RR is thinking long term, like how football clubs accept the fact that they won't be every year. Correct, but you tell me something. How often have RR made it to the playoffs? They don't have a very good playoffs track record. So I don't know. There is logic to what you're suggesting, but have they picked the right players to invest in? I don't know, yeah. I mean, Samson, they've invested in him since 2014. Got to move on from Samson, no? He's only played for this team. He's been there for 11 years. Yeah, so I don't know, my friend. I have doubts over how this team thinks. I don't watch IPL too much, but some I love to watch are because of Bolton power play. Like I said, Sean, they have sold them off. Cummins is not good with bowling. He conceded 60 in last now. Correct. He is not the ideal. He's not the ideal T20 bowler. I think Hazelwood and Stark are much better. But like I said last year, year before that, सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक इन्होंने पैट कमिंस द बॉलर को नहीं खरीदा है, उन्होंने पैट कमिंस द जीनियस को खरीदा है. एंड इफ पैट कमिंस is giving runs but his team is making the final, कोई बात नहीं. Don't go by these Aussies. Last year, you and I, Ravi Shankar, we were mocking Mitchell Stark at the start. Mitchell Stark did it. No? As you always said, Mitchell Stark steps up. You know how good Mitchell Stark can be. These Aussies, let them bleed runs. At the end of the day, the IPL trophy will either be won by Mitchell Stark or Pat Cummins. So it's okay. Let them bleed runs, yaar. Koi nahi. Correct. Sahi baat hai. Sahi baat hai. He needs to be humble. It's a good observation, Sohan. RR, if you remember, their social media game has always been the best. In fact, they sacked their social media manager 3 years ago for going off the top. So they've always been very, very good on that. But they were doing fantastically well when they had Jimmy Neesham and Trent Bolt and Daryl Mitchell. They had a lovely social media game with Josh Butler. So ye hota hai. I think maybe they've taken it a bit too far. So again, this is all just banter.
What really matters is the decision they took at the auction. JY, BCI and franchise make a lot of money. The players don't get paid enough. Nobody. Players don't get paid enough. ये पहली बार मैंने सुना. साल भर तो लोग आरोप लगाते हैं कि हमारे इंडियन प्लेयर्स और ओवरपेड. ये मैंने पहली बार सुना. Can you explain what you mean by don't get paid enough? They get paid. They get paid the best in the business. हाँ 350 हो सकता है यार. Will Vijay Kumar Vishak get the chance? Maybe. I don't know. He looks good. He had a fantastic match, but I think he'll have to keep going a little bit. नहीं भाई, बहुत बार कह चुका हूं, मुझे कमेंट्री में जीरो इंटरेस्ट है. मैं कर चुका हूं, 2 बार मैंने किया आईपीएल में और टी20 वर्ल्ड कप में लॉकडाउन के टाइम, बट आई डोंट लाइक इट. और जो चीज मुझे पसंद नहीं आए वो मैं करता नहीं हूं भाई. Correct. There will be many teams where he will struggle. He will struggle against spin on tough tracks. But again, 14 matches में से 7-8 में तो Travis Head चल जाएंगे. He's the guy is insane. There's very few players like him, and he might fail now and then. But what I will remember Travis Head for is smashing India into the dirt on November 19th and smashing India into the dirt in the WTC final. Forget the IPL. When it comes to winning the biggest trophies in the world, I think there's 3. There's the One Day World Cup, there's the T20 World Cup, and there's the WTC. Travis Head has won 2 of those on his own. That first day 100 he got at the Oval, that put Australia on course to win. And what he did to India and Ahmedabad, I remember these things. And if he was just a slogger, he wouldn't be able to do these. To smash India को अपनी औकात दिखाना, 2 सबसे बड़े विश्व कप के फाइनल में, I don't think a slogger can do that. Shami has to do well, not only. अरे भाई आप कहां चले गए? नंदन अब्बू अमीर, माफी चाहूंगा if I'm missing it wrong. Shami इंग्लैंड जाने के लिए भाई नहीं हो पाएगा. Shami was struggling in the Champions Trophy. Shami looks like he's struggling. He's struggling in the IPL, and I don't know. It would be a miracle if Shami plays all through the IPL and then goes to play Test cricket. But I want him back. So let's be frank. Players like Stark, Cummins don't get 100% IPL, but it's still better than the players. Bilkul, these are genius players. That's why they were paid 24 and 25 crores for last year. Me too, my friend. Me too. For RR to have any chance, they should go with the SRH template, but they don't have the. I agree. I've said this before also. कि जितनी भी टीम्स ये एसआरएच की टेम्पलेट अपनाएंगे उनके जीतने के चांसेस बड़े हैं. बट जायसवाल, दे हैव, लुक, if you have Parag, Jaiswal and Samson in your top 3, you should be able to do it. But I don't think they have the belief. They have the belief to actually to do it, my friend. I agree. He often finds a way to get out. But as I said, मैं कपिल जैन, मैं उस बंदे को फ्रॉड तो नहीं कहूंगा, because that Rajasthan Royals form got him into the Indian team when he got 300s last year. मैं फ्रॉड तो नहीं कहूंगा, पर हाँ इनकंसिस्टेंट बहुत है, शायद थोड़े ओवररेटेड भी हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात, जो अभी कुछ समय पहले किसी ने मुझसे पूछा, बंदा 14 साल से खेल रहा है, time to move on. That's my thing with him. Anyone who's saying Travis Head is a slogger in comments, correct. ठीक है, कोई नहीं है. People have their views. He's clearly, if you watch cricket clearly, you know that Travis Head is more than a slogger. ये भाई ये एसएच के 2 ओपनर्स आटापट, अतापी और बटा. देखिए मिचेल स्टार्क को मालूम है, यॉर्कर डालिए. मोहम्मद सिराज, ये मुझे अभी भी याद है, पहला मैच पिछले साल का जब इन लोगों ने खेला आरसीबी के साथ. आई सेड मोहम्मद सिराज अगर यॉर्कर डाल पाएंगे ट्रेविस हेड को ऑफ के बाहर, तो बंदा खुद आउट होगा. He did that. He beat him twice, but then he started bowling length and Travis Head just whipped him. Travis Head is extremely good with reflexes. He has weaknesses though. आप अगर स्टंप पे डालोगे, जो मिचेल स्टार्क ने, I think it was Ravishankar said right now, कि Stark when he bowls the ball up in those Yorkers, he can get you, but there's not enough bowlers bowling Yorkers. और Travis Head ऐसे बैट्समैन है, एक थोड़ा लक का सहारा मिल गया, he will take the game away from you. He's a very extremely frustrating player to watch because technique खराब है.
बट भाई साहब जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है उसका, मजा आएगा. Does KKR look like a team for top two? Yes, I have them. I guess you missed my prediction video. I have them in the top four, despite some very obvious weaknesses. Without Shami, there'll be overload of Bumrah. That's why I'm seeing backups. Correct. You नहीं, मैं बहुत बार कह चुका हूं, मयंक यादव कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे. मयंक यादव is breaking down every 6 months. He's not able to finish 5 IPL matches in a row. So let's forget any talk of मयंक यादव. बहुत लोग कह रहे थे मयंक यादव के बारे में कि वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, और मैंने कहा भाई जो बंदा 15 ओवर नहीं डाल पा रहा है एक आईपीएल सीजन में, वो कहां टेस्ट क्रिकेट खेलेगा. You need to figure out ways to get Arshdeep Singh into the test team. You have to figure out ways to bring Avesh Khan back into the test setup. Go for the bowlers who at least played some domestic cricket. Ideally, go for the ones who've gone and played county cricket. If Arshdeep Singh has played 3-4 county matches for Kent, try to get him. So, again, there's so much talent, yaar. There's so much talent when it comes to India. But unfortunately, too many young fast bowlers, all they want to do is bowl fatafat 150 IPL mein and get injured. Chaliye, last couple questions. Who's not gotten a chance? राघवेंद्र कह रहे if Ezra is bad first then आज फिर होगा. हाँ भाई, आज का शो का टॉपिक यही है, अब की बार 300 पार. I think it's going to happen today, especially if if Hyderabad bat first. मजा आएगा. मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम पे, मैच रिव्यू करेंगे, कल रात का मैच प्रीव्यू करेंगे. गुड डिस्कशन टुडे, आई लाइक द कमेंट्स टुडे. एंड मैं चला काम पे, 11 बजे माय डे स्टार्ट्स ऑफिशियली. ये तो वो था, क्या बोलते हैं, नेट प्रैक्टिस, ये था वार्म अप. मिलते हैं आपसे कल, ठीक है. मेक श्योर यू आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आल्सो ऑन यूट्यूब, बिकॉज़ आई एम पुटिंग अप अ लॉट ऑफ शॉर्ट रील्स एवरी डे एंड ऑल. ठीक है, मिलते हैं. टेक केयर, बाय, जय हिंद.